we don't need to be spending beyond our means or sole purpose of our life being कि हम इतने पैसे earn कर लें कि हम ये चीज खरीद सकें, because ये चीज जब खरीदेंगे will be a representation of our own value. बंदे की वैल्यू जो होती है वो मटीरियल एक्विजिशन से नहीं होती, वो सारी चीजें इसी दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे जब हम यहाँ से जाएंगे. Just because you need to show off this symbol of status to your इर्द गिर्द के लोग. वो जैसे हम कहते हैं ना कि यार मतलब जो शादियां भी जो होती हैं वो इतने बड़े बड़े शोज वगैरह जो हम कर रहे होते हैं वो किस लिए होते हैं? बिकॉज इट्स अ पावर शो, इट्स अ वेल्थ शो फॉर सम पीपल. मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, आई डोंट डू दैट इंटेंशनली, बट एट द एंड ऑफ द डे what is the point of going so much beyond your means, that you even have to borrow money? And now that I've come across, I mean, advertisements like Jahez package and all of those things, come on, who are you selling these products to? And if you are marketing this, that means that there does exist a market for that. They called me back on that number. Normally ये होता है, आपने कभी किया होगा, बैंक कॉल किया आपने, लगे हुए लंबी सी प्रॉब्लम जिसका कॉन्टेक्स्ट समझाना है किसी को ताकि आपको हेल्प कर सके, आप समझा रहे हैं, उन्होंने आपको होल्ड पे लगाया और कॉल ड्रॉप हो गई और उसमें आपने अपना सारा जो है शजरा नसब बयान कर दिया है, आपकी वालदा का नाम, अपनी तहरीके पैदाइश, और वो पहला मेरा ख्याल है इंस्टेंस होता है पूरे दिन में जब आपको कोई मोहतरम कह रहा होता है. उसमें वो 20 मिनट के बाद जो आपकी जब कॉल कट जाती है तो आपके मुंह से जो है मोहतरम तो नहीं निकलता, फिर उस वक्त बहुत कुछ और निकलता है, मोहतरम नहीं निकलता. इट्स अ ग्रूमिंग प्रॉब्लम बोथ फ्रॉम एन इंडिविजुअल. लीडर्स बहुत कम है, बॉसेस बहुत ज्यादा है. अपने आप को समझते हैं बट बॉसेस बहुत ज्यादा है, लीडर्स कम है. लीडर का मकसद, एटलीस्ट मेरी डेफिनेशन लीडर की है कि और लीडर्स बनाना. और लीडर्स तब बनते हैं जब आपकी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की कैपेबिलिटी होती है विद इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, आस्किंग द सेंट्रल व्हाई. जब व्हाई पूछ रहा होता है और सारे कंपनी लाइन टो कर रहे होते हैं तो वो स्टेटस को पे फॉल कर जाती है कि यार एंड पे मेरा बॉस जो है वो वैल्यू क्या करता है? वो वैल्यू करता है कि जब हमारी मंडे मॉर्निंग मीटिंग होगी तो उसके अंदर उसने द ओनली मेट्रिक्स ही केयर्स अबाउट इज द सेल्स एंड द रेवेन्यू मेट्रिक्स. तो वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो जरा सी कम है. ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स बहुत कम बैठे हुए हैं. जो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होते, फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, दे लीड फ्रॉम फियर. अब फेयर का सबसे बड़ा जो निशान है वो ये है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अपनी 1.5 इंच की मस्जिद यहाँ बना के गाड़ रहा हूँ, बट मैं और यहाँ आने नहीं दूंगा. मैं टेरिटोरियल भी हूँगा, ना मैं किसी को सिखाऊंगा, क्योंकि सिखा दिया तो मैं अच्छा, उसमें मुझे लगता है कि फेयर की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि पीपल जस्ट स्टिक टू वन कंपनी, वन इंडस्ट्री ऑल ऑफ देयर लाइव्स एंड दे डोंट एक्सप्लोर. एंड उसमें प्रॉब्लम, अब आई डोंट नो, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि जब लोग एक ही जगह पे रह जाते हैं तो उनको ये पता होता है यार अब हमने तो इधर ही रहना है, हमारे स्टेक्स आर कंप्लीटली लिंक्ड विद दिस कंपनी और विद दिस पर्टिकुलर सेक्टर एंड वी वोंट बी इन डिमांड इफ वी आर जस्ट किक्ड आउट ऑफ दिस कंपनी टुडे और इफ वी लीव दिस कंपनी. और इसमें मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि पीपल टेंड टू अग्री टू एनी एंड एवरीथिंग दैट द बॉसेस पुट देयर वे. No boundaries. Humans working there. I think human resources in itself is a very dehumanizing term. Because हम लोगों को इंसान के तौर पे फिर ट्रीट नहीं करते, लोगों को एक प्रोडक्टिव टूल के तौर पे, रिसोर्स, टूल के तौर पे यूज करते हैं, रिसोर्स के तौर पे करते हैं. जब इंसानियत आप उसके इक्वेशन में निकाल देते हैं तो फिर आप ये भी नहीं केयर करते कि यार ये लोग फील किस तरह करते हैं. Are they burnt out? Or are they at peak mental performance? Are they people that are really loyal to the company, or are they people that are going to switch when due to the economic circumstances a better offer comes their way? और ये bleep कर दीजिएगा मेरा ये सेंटेंस, अगर एक बंदा काम पे बन रहा है तो चांसेस आर कि उसको एक बॉस मिला था जिसने उसको समझाया कि ये चीज नॉर्मल है और काम इसी तरह होता है और तरीका कोई नहीं है काम करने का. The one thing that ties it all together, the marketer is curious about who he or she or they are speaking to. Because if you don't have a clear idea of who it is that you're speaking to, you will be saying nonsense to everyone, hoping that there's a dent in your conversion numbers, but you won't see that happening. Assalamu alaikum everyone. This is Ammaar bin Salim. Welcome to another episode of Outloud with Ammaar. We are recording season 3 and this is episode 7. And आज हम बड़े मजे की जो एक discussion topic है हमारा, that is marketing. Marketing ऐसी एक चीज है जो कि power रखती है
लोगों के बिहेवियर को चेंज करने की, ठीक है. इट कैन हेल्प यू थिंक पॉजिटिव अबाउट समथिंग एंड इट कैन आल्सो मेक यू थिंक नेगेटिव अबाउट अ सर्टेन थिंग. एंड टुडे वी हैव a guest who has joined us from Karachi, although he is from Lahore, and we're going to get into that कि क्या ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से he had to go to Karachi. But he is a marketing guru. He's worked with numerous organizations. Some of the more prominent ones, in my opinion, are Ford Motor Company. He has worked with Ogilvy, and now he has his own marketing agency, Look Creative. Let's welcome Tajdar Chaudry. Tajdar, Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Ammaar, and thank you for that humbling introduction. Much better than I would have done. It's a pleasure to be here and have this conversation with you. Oh, मैं तो अब जस्टिस कर नहीं सका. एंड आई ऑलवेज से कि मेरे गेस्ट माशाल्लाह दे आर सो ग्रेट. मैं जितना भी कोशिश कर लूँ, आई जस्ट कैन नेवर डू द राइट इंट्रोडक्शन, बट आई वाज जस्ट मेकिंग एन एफर्ट. So, but again, it's an honor for me. Okay, I'm talking to you about marketing, which is something that pertains to many of us in Pakistan, across the globe as well. So it's an honor. Thank you very much for finding time for us, Tajdar. So Pleasure to that be. sorry. It's a pleasure to be here. Achha, Tajdar, so let's start with your journey. So you were, as we were discussing right before the podcast, I want everyone to hear this, and you can be as candid as possible, because then I'm gonna make some cuts out of this, and we're gonna roll some reels out. तो बताइए कि आप जब लाहौर में थे तो आपने फिर कैसे डिसाइड किया कि यार मैं कराची चला जाऊं? So पहली चीज तो ये थी कि लाहौर में कुछ 30 साल रह चुका था before I left the first time around. And अच्छा. मेरा ये था, I grew up as the eldest son of a PIA pilot. तो हमें बड़ी Oh. बचपन से आदत थी इधर उधर घूमने की. एक उम्र तक, 26 साल की उम्र तक तो टिकट भी फ्री होते थे. तो उस चीज की वजह से एक चीज जाहिर हो गई कि दुनिया लाहौर से बाहर बहुत बड़ी है. एंड कभी कभी लाहौर में रह रह के वो लगता है कि सिर्फ लाहौर ही दुनिया है, which can present its own kind of hurdles to growth. So in a short answer, I moved temporarily to Karachi in pursuit of growth. Okay. And shukr alhamdulillah, being a Punjabi, sitting here and trying to take in everything that Karachi has to offer, the culture, the people, the food, the history, the business dynamics. Yeah. It's been a learning experience and vastly different from anything that I could ever imagine कि मैं लाहौर में बैठ के experience कर सकता था. अच्छा, तो ये मुझे बताएं, जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि मुझे भी काफी ज्यादा इत्तेफाक हुआ है कराची जाने का. ऑल ऑफ द सिटीज आर पाकिस्तान, तो वो तो हम कह नहीं सकते, बट इफ यू वर टू ड्रॉ comparisons between the two, what is that one best thing that you love about Karachi, and what is that thing that you love better, that you see कि यार लाहौर में बेहतर होता था, मतलब ये मैं मिस करता हूँ. Lahore, roads, definitely. Not the traffic, just the roads. अच्छा, not the not the traffic, Not वाकई. the traffic, just the roads. Karachi, I think for me, it has to be the diversity. लाहौर में Absolutely. जितना मैंने टाइम गुजारा है, मैं उसको पूरे को पुट टुगेदर कर दूं तो ये जो तकरीबन 4-5 महीने हुए हैं, me and my wife being here, it's a very different kind of exposure. And there's so many different kinds of people that make up the social fabric over here versus Mm-hmm. the Punjabi, Sunni, male overwhelming majority that I would normally experience in Lahore. It's females as well, but what I'm talking about is the broadband majority जो होती है वो एक clear majority by a stretch होती है, and then फिर छोटे छोटे dots and trickles होते हैं that represent diversity. तो कराची में एक वो चीज definitely एक ऐसी थी that really allowed me to come more out of my shell. One of the main reasons I left Lahore was because Lahore was and will always remain to be my comfort zone. खानदान वहाँ है, बड़े वहाँ हुए, जान पहचान सारी वहाँ थी. So that's a place I know. So every time I moved out of Lahore, it's been an effort to kind of get out of my comfort zone and also get out and see the world in different shades as opposed to the one or two level of absolute truths that I would live by previously before I'd actually gone out and explored these places. And it actually helps with
my profession as well. So marketing is like the broad man thing, but the reason I got into marketing, जिसना आपने भी अपने intro में बोला, it's about behavior change. Behavior Exactly. change happens when you understand who the target audience is and you Right. have a deeper, more intimate understanding of them. If all you're seeing is one kind of target audience your entire life, then that's the only set of needs that you will ever learn how to address. So being in these kind of Mm-hmm. environments helps me kind of take out certain biases that I might have holding my own judgments back, Mm-hmm. allows me to understand human beings in a more broader perspective, Right. and ultimately impacts the quality of the work that I give. I think you're absolutely right. Matlab, yes, we appreciate the fact that we have better roads and we have more clean roads and the infrastructure overall is better. And as you said, I don't miss the traffic because traffic is getting worse. And I say we are competing with Karachi on that. मगर मगर उसके अलावा when I was just thinking to myself a couple of days back, and in my videos I've made a lot of comparisons with India, so how, because both of these countries got independent at the same time, both of them were pretty much on the same trajectory at a certain point in time, not anymore, of course. So what went different for India and what went different for Pakistan? And I was realizing uh, how lucky, or I don't know, I don't have the right word for it, but Indians are definitely lucky in the sense that they have a lot of diversity. This is something, and the way they have branded themselves across the globe, people want to go and explore India and not Pakistan as much. And one of the consequences of that has been that we are not aware of, we don't get to see so many foreigners roaming around our roads, and we don't see that kind of diversity. और मुझे थोड़ा सा ये लगती है ये वाली बात कि generally अब तो मेरा ख्याल है the trends have started changing now. People are like you, like yourself, have moved out to Karachi and now you're moving to another city. It didn't used to be like that till a couple of years back. मुझे लगता है लोग जो है वो कहते थे if we are in Karachi, so that's our comfort zone, like Lahore is a comfort zone for me. तो वो diversity होना ना कि सिर्फ मेरा ख्याल है एक ह्यूमन एक्सपीरियंस इसको शेप करती है, बट एज अ मार्केटर इट प्लेज अ ह्यूज रोल बिकॉज देन यू आर अवेयर ऑफ द डाइवर्स नीड्स ऑफ पीपल एंड देन यू कैन cater to all of those segments. Absolutely. So I think you can go anywhere in the world and market. You can go to मैं यहाँ से उठ के Paris भी गया हूँ, Bangkok में भी my Ford Motor engagement was based out of Thailand, and I was looking at Southeast Asia. And Southeast Asia में 8 different countries थी जिनके 8 different cultures, different languages, different kind of cultural insights as well as motivational insights there. And if you really want to be able to market effectively, go and learn the culture and the people of a place. If you understand that, that's more than half the job done. Then it's just about the context with which every brief comes to you. Absolutely, absolutely. मेरा ख्याल है वही जैसे हम बात कर रहे थे कि at the end of the day marketing के through what are we trying to achieve? We're trying to make people act in a certain way, the way that's favorable for us. And how is that ever possible if you're not studying your target audience? So you're, I think you're very rightly mentioned कि आपको उस जगह पे जाना है. Again, इससे मैं वैसे before we get into that, let's start with something very basic. Who is a marketer in your opinion? Marketer होता कौन है? What is the textbook definition of it, and what is an expert's definition of a marketer? So the textbook definition of a marketer would be someone who is taking a product or a proposition and creating commercial capital value out of it by bringing it in front of an audience that would be primed to purchase it. मेरे हिसाब में a marketer is someone who is able to create a need within someone else. And that comes with a very heavy responsibility, by the way, because it's easier to sell. It's harder to sell with keeping your integrity intact. So what's happened is because of social media tools, paid marketing tools that have propped up because of the digital revolution, it's become more than easier than ever to put your product in front of an audience and hope that they will purchase it. अब उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, do they actually need it? Is this something that I'm doing to fatten up my shareholder value for the company, or is this something that I genuinely believe will make the lives of other people better? Right. If you're doing it for the second cause, then by my
definition, and this doesn't have to agree with anyone else's, this is just my definition, then you truly are a marketer. But if it is not aligning with certain core values, and it's Mm-hmm. not making people's lives better, and the only lives it's hoping to make better are the shareholders of the company that that product belongs to, Mm-hmm. uh, then just in my view, and again, this is going to piss off a lot of people, but such is ये मेरी अपनी definition है. I Mm-hmm. think that's very predatory. I think that's also very, it shows a lack of integrity. Mm. It is creating an environment where you are the only value that has any value is money. Money. As long as it's exchanging hands, Yeah. you're good. Yeah. You don't need to have your conscience play into it. You don't Mm-hmm. need to have any form of integrity into it. You don't Mm-hmm. even need to go out and test the product and see if it actually works. You just need to sell as much of it as possible in the Yeah. pursuit of some big, lofty targets that's been Yeah. set by this closed room of people sitting. And chances are those people themselves have also never interacted with the target customer. They're only concerned with the balance sheet. They're only concerned with the P&L and seeing a profit at the end Mm. of each term. Absolutely. I mean, like, and what would you say? Who is to be, blamed for that? Should we be blaming ourselves for that, or should we be blaming the schools that we got the marketing education from? Because I think this is something. Because let's talk about brass tacks, right? So whenever we go to a business school, whenever we get to interact with people who are from the business community, many of them, and again, I'm also being very cautious when I say this, many of them, at the end of the day, are looking at heftier profit P&Ls, right? So if your end goal is money, then as a marketer, who would you say has failed in this situation? Who would you say has failed in this equation? So let me start off first by saying there's nothing wrong with earning money. Hmm. If earning money is your only intention, your only objective, your only purpose, then Mm-hmm. that's a problem, because you're putting money on a pedestal Mm-hmm. where it comes first and everything else comes afterwards. Mm. Number one. Number two, rather than find things to blame, I would rather say there are two things we can look at Okay. that can help improve things. I've been a complainer for a long period of my life, so not too long ago I decided that I want to figure out what the solution is, Okay. because it's apparent that a lot of people can see the problem. That's not the problem. People unable to see the problem is not the problem. People unable to offer a tangible or any kind of solutions once they see the problem Mm. is essentially the bigger problem. Right. Two things over here. I think one, for sure, capitalism. Capitalism in its current form has failed spectacularly, and we Mm. see this from a macro to a micro level across the Yeah. world. There's this Yeah. belief that capitalism will make the world better, or then other people take the argument that what would you rather have? Would you rather have Yeah. communism or socialism? And I think both of Absolutely. those are false arguments. What we have to look at is not capitalism in theory, but capitalism in practice. Capitalism Mm. in practice. There's so many years that let's take capitalism taking like getting supercharged growth after World War II, right? Mm-hmm. At that particular point in time, since then till now, what we see is greater income inequality, greater inequality across the board, across different functions. And what you're seeing is your geopolitical relationships also being defined on the backdrop of what is the capital gain or capital value potential over here. Absolutely. Uh, it's being Absolutely. done less with, and we've taken things like globalization and said, oh, the Coke in one corner of the world should taste exactly like the Coke in the other corner of the world, or every corner of the world should be able to have a McDonald's. And in trying to standardize that, we've lost our own inherent identity and culture and our own values along the way. So we would rather try to fit into this globalized mold rather than have any understanding our sense of unique Mm. identity, right? So an example I could give you is कि Big Mac हर जगह मिलता है. Mm. अगर लेकिन Big Mac, मिर्ची Big Mac या इस तरह की जब वो different चीजें try करते हैं, that's a local twist on it. Yeah. That's closer to our culture.
या So जैसे मैकडॉनल्ड्स ने कुछ साल capitalism, पहले वो बनाया था अंडे वाला बर्गर. हाँ, right? It works here because locally there's a case to be made over here. There's already a demand for it. Right. What capitalism has done is essentially it's taken unique identity and kind of homogenized it into this global availability. And when we see things like there's this argument that capitalism has done a lot of work good for the world. Capitalism, ultimately, the end game is whoever has the most amount of resources has the most amount He's of the say. winner. Yes, 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 Right? yes. So, in a twisted, imbalanced system like this, the resources of the world, at least more than the majority, are in the hands of like a tiny fraction of the People, world, yeah. while everyone else is suffering. Everyone else is And suffering. Exactly. And what happens is when you take this system and you don't question it that much, you have colonial capitalism per se. That stuff gets starts getting taught in our schools without really any kind of critical thinking applied to it, without understanding what benefit or value it adds. Now, if I could give an example, हमने लाहौर की रोडों की बात की. Now, the Sharifs, PMLN, whatever they are, one thing that cannot be taken away from them is that whenever they come into power, they create infrastructure. That's absolutely correct. Whatever the motive or intention behind that infrastructure is a separate debate right now. Yeah, But they yeah, create yeah. infrastructure. But on the face Now, of it, they have done work. They have done work that benefits the average Joe. It does. yeah. Their response was let's build infrastructure so the economy can get boosted and we will have more of a participation in the capitalist global system. What they did not account for is that every time they build a road, they have to cut trees. And there will come a point in time when the amount of cars on the road because of this Jadid roads will be so many that the amount of trees existing, which were further reduced, will not be able to capture the amount of carbon that's being emitted from those cars, ultimately leading to a polluted environment. Now, this is something that they don't have a response for, but they came in with the thought that if we build the roads, if we build the infrastructure, there will be development and we will prosper. And sadly, that's what we have seen happening in Lahore. I mean, there are so many people, there are so many friends from Islamabad who say they've just moved to Islamabad because of the pollution in Lahore. And it didn't used to be the case like that, because 5 years ago, I remember, I think that was the first time that smog hit us. And we were all wondering as to what the hell was that. So I think that was the first time that we realized how polluted of a city Lahore had become. Absolutely. So there was no vision there. There was just a desire to create infrastructure for the sake of better participation within the capitalist world order. Now, if you were to look at it from the other end, you would look at it from the end of what is it impacting these roads? What will it help build? When that thing is built, what are some of the variables that I will need to consider that are not existing yet? Yeah. Right? So, gaadiyan aur aa rahi hogi. Do I need to create any kind of regulation for cars, or do I need to have stronger environmental regulations to ensure that the standardization of emissions from these vehicles is kept on board, and unless the car meets a particular specific requirement for emissions, it's not allowed on the roads. None of that exists. It was only done for the sake of chasing more money, building that infrastructure, and then just letting it be where it is. So when we don't question, when we don't critically think, we're not ready to make tough decisions. And sometimes the tough decision means maybe I shouldn't sell to this person. Maybe this person doesn't need to buy from me. Maybe this person just needs to understand why my product is helpful and ultimately create the need for the product category rather than my product. Like, matlab us category, like if you're starting your career, you don't have to go and buy a Civic. Maybe you could, settle for a Honda City, or maybe a Meran, or maybe Alto. Up to Honda City is very expensive. So mere paas to purani examples hain. But you're right. Like, create a demand for that category instead of creating a demand for that particular product that you are selling. And what we've done is we've attached a certain level of status associated with different levels of purchases. लेकिन फिर ताजदार मुझे एक बात बताएं, अगर if you're not creating that status associated with a certain product that falls in a high price bracket,
तो वहां पे वो कहेंगे नहीं कि यार मतलब देखो एक ब्रांडिंग का एक मार्केटिंग फेलियर नजर आ जाता है बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग अ नीड फॉर दैट. सो मुझे एक होता है, मैंने बनाई सिटी, मैंने ब्रांड न्यू सिटी बनाई है, होंडा सिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट अ फुल फ्लेज्ड सिटी. मैंने होंडा सिटी बनाई है, उसकी प्राइस एक्स है. मैं ठीक है. टारगेट करूंगा उन लोगों को जो खरीद सकते हैं. ओके. उस तरह होता नहीं. होता ये है कि उन लोगों को टारगेट किया जाता है कि जिनके पास, जो नहीं खरीद सकते, कि ये खरीदोगे तो तुम्हारी वर्थ जो है वो इस वो तरह व्यू की जाएगी. उसमें आ सके. और उसमें मेरा ख्याल ठीक है है. बैंक्स प्ले अ ह्यूज रोल. Absolutely. That's why we're seeing, I don't know what the outcome will be, but we're seeing a bit of push towards Islamic banking coming in, which is kind of taking away from the current system, which is a bit predatory, and ultimately all banks down to बैंक पैसा किस तरह ज्यादा बना रहा है, not कि banks customer को किस तरह सर्विस अच्छा कर रहा है. सर्विस कर रहा है. Yeah, there is, we don't need to be spending beyond our means, or sole purpose of our life being कि हम इतने पैसे अर्न कर लें कि हम ये चीज खरीद सकें, बिकॉज ये चीज जब खरीदेंगे विल बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर ओन वैल्यू. बंदे की वैल्यू जो होती है वो मटेरियल एक्विजिशन से नहीं होती. वो सारी चीजें इसी दुनिया में छोड़ के चले जाएंगे जब हम यहाँ से जाएंगे. उसकी एक फंक्शनल नीड होती है, राइट? उस फंक्शनल नीड को आगे प्रायोरिटाइज करना चाहिए, रादर देन spend more than your means, have more credit than you earn, and always be in a cycle of debt just because you need to show off this symbol of status to your ird gird ke log. इर्द गिर्द के लोग वो जैसे हम कहते हैं ना कि यार मतलब जो शादियां भी जो होती हैं वो इतने बड़े बड़े शोज वगैरह जो हम कर रहे होते हैं वो किस लिए होते हैं बिकॉज इट्स अ पावर शो इट्स अ वेल्थ शो फॉर सम पीपल मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन आई डोंट डू दैट इंटेंशनली बट एट द एंड ऑफ द डे what is the point of going so much beyond your means that you even have to borrow money and now that I've come across advertisements like Jahez package and all of those things. Come on, yeah, who are you selling these products to? And if you are marketing this, that means that there does exist a market for that. अब वो रिक्शों के पीछे भी ना मुझे लाहौर में नजर आने वो जहेज पैकेज होता है जी उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में बाय करें. I was like what? मतलब सोचें, are you for जो real? लवली, फेयर एंड लवली का आप देख लें. सो मार्केटिंग, द रीजन व्हाई I'm trying to take a shift in my own marketing is that marketing should not create insecurity within you. Marketing should not be selling to your insecurities. Marketing should be giving you a sense of security within a particular product. Not that तुम में कुछ कमी है, ये लो खरीदो और तुम बेहतर हो जाओगे, जैसे फेयर एंड लवली बेच रहे थे ये लोग कि सांवली रंगत जो है उसके साथ कुछ मसला है, ये क्रीम खरीदो ताकि तुम गोरे हो सको और तुम्हारी वैल्यू जो है सोसाइटी के अंदर हो जाए. सोसाइटी तो they rebranded it, remember? Glow and Lovely, I think they उन्होंने उसको they changed it, didn't they? Yeah, but if you look at the functional messaging, it's the same. It's the same. It's कि आप काले से गोरे हो जाओ. काले से गोरे हो जाओ. काले से Which गोरे, is, सही बात. there's something so inherently wrong with that. Or the problem is that we don't really question these things as a society. आजकल एक चीज चल रही है, there's this big तेरे बिन कोई ड्रामा आया. मैं इतने पाकिस्तानी ड्रामा देखता नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है. there's a drama called तेरे बिन जिसके अंदर एक marital rape का सीन insert किया हुआ है, and the writer is actually justifying marital rape. हमारे यहाँ एक कंसेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है. किसी से पूछना कि वो क्या चाहते हैं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. हर कोई आता है मैं बताता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, या मेरा हक है तुम्हें बताना कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो पता ही नहीं. वो एक तरह से ट्रू इसलिए भी है बिकॉज हम सवाल नहीं पूछते. वी डोंट क्रिटिकली क्वेश्चन. We don't question exactly. और यही वाली चीज जो है हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस वगैरह वहीं से मतलब मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ. आई डोंट सी मतलब देयर इज नो हार्म इफ समबडी वांट्स टू गो टू ए नॉर्मल इन द सेंस कि यार गवर्नमेंट स्कूल चले जाओ या कोई ऐसा स्कूल दैट यू कैन इजीली अफोर्ड. बट आई वाज इन अ पॉडकास्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक एंड आई वाज टेलिंग कि यार द वे दीज टॉप टियर educational institutes are imparting education, this is how it should be done. Although it shouldn't be that expensive, क्योंकि वहां पे जो है of course जब आप जाहिर बात है when you need access to the best teachers, when you need access to the best practices and to the right sort of curriculum and books and all of those things, it's going to cost you money and it should ideally be the government's responsibility. मगर वहां पे सिखाया क्या जाता है? वहां पे सिखाया जाता है to question
and teacher only plays the part of plays the role of a facilitator. Student ने he or she has to draw his or her own क्या कहते हैं उसको, जो भी learnings हैं उसमें से वो खुद उसने जो है extract करनी है, और हर बंदे की जो understanding है it should be different, can't be the same. तो वो तभी हो सकता है when you are questioning whatever you have been taught. Otherwise you're building sheeple. Absolutely. So abhi to humne khair matlab we have discussed this, and now let's move on and talk about pure marketing and sales. So what do you think is the difference? Because I've come into many debates, or I remember there used to be an uncle who used to work for a pharmaceuticals company, and he was purely engaged in sales. And at that time I was pursuing my MBA, and I distinctly remember I was in the last semester, I guess. और उन्होंने मेरे से जो है एक क्वेश्चन पूछा, यार बेटा मुझे बताओ मार्केटिंग और सेल्स का डिफरेंस क्या है. एंड आई वाज लाइक, उस वक्त बैठ के जो था ना, आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दोस डेफिनेशंस, एंड जो भी मैंने अंकल को कहानी तो घुमा के दे दी जो दे सकता था. बट मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज है दैट नॉट मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ. लाइक मतलब वो अक्सर आप कंपनीज में जाएंगे, स्पेशली द कंपनीज दैट आर सो ट्रेडिशनली एंट्रेंस्ड इनटू ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, वहां पे मार्केटिंग और सेल्स का डिपार्टमेंट सेम है. So what exactly is the difference between marketing and sales? In my opinion, मुझे लगता है sales is a function of marketing. You could correct me. It can be. It depends on how the organization is structured. There's no right answer. It's a peripheral variables problem. Mm-hmm. So it's depending on how the organization is structured, what kind of product it has, what kind of target audience you're looking at, what level of scale do you want to achieve, what is your revenue ambition. So if I can go back to your earlier question, the earlier question was that what is the difference between marketing and sales? So in a nutshell, I would say marketing is, why do you need this? That's the central thing that it should establish. Mm-hmm. Sales is, why should you buy this? Marketing, why do you need this, and why should you buy it? Yeah. So why do you need it is establishing what role this product or service could have in your life. What can it make easy for you in your everyday रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, depending on the kind of product. Why should you buy this is sales department, which is once the customer. So let's talk to a user journey. Right. आप ऑनलाइन आते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे आपको एक ऐड नजर आता है. ऐड के अंदर आप प्रोडक्ट का डेमो दिया हुआ है, दिखाया हुआ है कि यार ये एक कटर, मल्टी फंक्शनल कटर है किचन के लिए, जो आप एक्सवाइज करके आप I think I've seen the same ad that you have. हाँ, हम सब इंस्टाग्राम पे. So it's about telling you कि यार आपका 20 मिनट का काम आप 5 मिनट में किस तरह कर सकते हैं, ये देखो ये हो रहा है. Right. जब आप क्लिक करते हैं उसके ऊपर तो आप एक सेल्स पेज पे जाते हैं. उस सेल्स पेज के ऊपर आपको और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि उस सेल्स पेज पे ज्यूम ये हो रहा है कि आपने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली है और आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोडक्ट में, एक इंटरेस्ट है, बेशक अगर प्रोडक्ट खरीदने में हो या ना हो. अब मैं लेकिन वहां पे लीड नर्चर होना स्टार्ट हो जाती है. हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप ये खरीदेंगे, अगले 5 घंटे के अंदर या अगले 5 मिनट का और एक काउंटडाउन लगा होगा जो हर 5 मिनट बाद खुद ही रिफ्रेश होता रहता है. उसके ऊपर आपको विद इन दैट आपको X% डिस्काउंट मिल जाएगा. चलिए अगर आप अभी खरीदेंगे तो आपको हम एक X अमाउंट ऑफ की एक रेसिपी बुकलेट है जो $2000 की वैल्यू है, हम आपको मुफ्त दे देंगे इसके साथ. It's packaging the incentives and really convincing someone that this is worth the amount of money that they're going to put in. This purchase has value. Okay. So sales and marketing is, this product has value is marketing. This purchase has value is sales. And they can be both part of the same function. So it can be newspaper organizations के अंदर sales and marketing department होता है. ठीक है? Sales and marketing, exactly. बिल्कुल. काम है कि मैं काम करता था एक जमाने में पाकिस्तान टुडे पे, तो उस वक्त एड्स भी बेचे हुए हैं. और हमारा काम, यार ये न्यूज़पेपर है, इसका ये सेक्शन है, इसके ऊपर यहाँ ऐड आएगा. और जब ऐड आएगा तो आपके इतने लोग देखेंगे क्योंकि हमारी सर्कुलेशन इतनी है. और ये देखें पास्ट के अंदर ये इन पार्टीज ने यहाँ ऐड लगाया, इस स्पेस पे लगाया. हाँ. अच्छा, what do you think? Do you think it's possible for sales to exist without marketing? Not really. You can say you can have a sales department, but in order to sell the product, it will have to market the product.
they will have to. Well, what about direct sales? मतलब जाओ जाके मिलो जाके मतलब वो the way वो मार्केटिंग कर रहे हो तो फिर आ गया ना जो हमने मतलब बात की यूजर जर्नी की, जो हाँ यूजर जर्नी की बात हमने की थी, जिसके अंदर आपको वीडियो नजर आती है इंस्टाग्राम पे और आप वेबसाइट पे जाते हो, या सेल्स और मार्केटिंग की चीज कंडेंस कर लेंगे, वही सेल्स वाला बंदा डायरेक्ट सेल्स के अंदर जाके दिखा रहा होगा यार तो ये वो देखिए ये मार्केटिंग प्रोडक्ट है हमारा, ये हमारा ये करता है. मार्केटिंग हैज टू एज अ कॉन्वर्सेशन हैज टू बी बिफोर सेल्स बिकॉज बिफोर यू establish the purchase intent there needs to be the consideration for it. वो consideration ही नहीं है तो then it's very ineffective marketing and sales because you'll essentially be wasting a very important resource which is your time going through and selling to people who have no desire to buy it as it is. And then you're creating a desire right there and then, which is I think the hardest thing that you can do, and especially in this age. And while we're talking about that, what do you think कि अब तो मैं वैसे देखता हूँ कि इवन B2C जर्नी तो खैर फिर भी जो है ई कॉमर्स से हो रही है एंड आई वाज लुकिंग इनटू इट, मगर मुझे एक बड़ा मजे का स्टार्ट मिला कि B2B buyers, if there is a party, if there is a business party who is planning on buying something across the globe, 40% of the buyers start their journeys online. And that was like something very, very eye-opening for me in the sense that you would also know the B2B buying journey is like, it spans over a lot of months. It's not even a matter of days. In most situations, it takes a lot of time for a B2B lead to be converted to a consumer. तो मुझे इसमें ये एक जो क्वेश्चन तंग करता है वो ये कि व्हाट अबाउट द कन्वेंशनल प्योर direct sellers, who would contact their clients in the US or who would contact their clients wherever they would be, and there is no concept of relying on social media as a marketing tool, as a marketing vehicle. Do you think they have they can exist, or do you think they can coexist, or do you think they'll still be in demand like a decade from now? So let's frame this in a way that we are able to come to a conclusive answer. पहली चीज है कि cold calling has always existed and likely always will. What's going to change that is a couple of parameters. One is, let's say, a weekly or a monthly sales target. That monthly and weekly sales target, if it goes beyond your ability, let's say कि आपको एक टारगेट मिला है जिसके ऊपर आपको करनी है 1000 कॉल्स, कोल्ड कॉल्स करनी है, राइट, और 2 साल के बाद वो टारगेट जो है 5000 बन गया लेकिन रिसोर्स उतना ही है, एक बंदा है, अब वो एक बंदा मैक्सिमम पुश भी कर ले तो वो 1500 कॉलें कर सकता है एक महीने के अंदर, which means falling short of roughly 3500 calls, right? Now the problem with cold calling is there is no level of, there's very little segmentation done. एक एग्जांपल क्या दे सकता हूँ कि एंड मीन के आई अभी तक नहीं हुआ तो आई होप दिस एंटर्स द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. पाकिस्तान के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डेटा प्राइवेसी का या डेटा शेयरिंग के ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है. तो होता क्या है, मैं जमीन पे जाऊंगा या मैं अपने बैंक के साथ कब बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जमीन पे गया हूँ, मैंने जाके कुछ क्वेरीज डाली हैं, अब उनके पास नाम आ गया कि यार ये बंदा प्रॉपर्टीज ढूंढ रहा है. My God, the amount of direct WhatsApp messages that I'm getting कि आप खरीदना चाहते हैं, अब ये वाली आ गई है, अब वो आ गई है, अब ये उससे भी बेहतर है. All while no one asked. मैं पूछता हूँ मेरी डेटा कहाँ से आपको मिली है? Exactly. तो किसी ने क्वालिफाई किया कि मैं खरीदना चाहता हूँ या नहीं खरीदना चाहता. How did you come to decide that I'm your target audience? Yeah. Now in the case of WhatsApp, it's a scaled solution. मैंने एक मैसेज डालना है, मेरे लिस्ट आई हुई है लोगों की दैट माइट बी पोटेंशियली सेमी सेगमेंटेड, और मैं इन लोगों को डालता हूँ इन द होप्स के यार चांसेस आर इन्होंने इंटरेस्ट एग्जिबिट किया है प्रॉपर्टी खरीदने में तो शायद ये बायर बन सकते हैं. कोल्ड कॉलिंग में आपके पास उसी तरह की लिस्ट आई हुई है एक्सेप्ट आपको सारी चीजें जो है मैनुअली कर रहे हैं आप. सही है. तो आपका जो कॉन्टैक्ट है उसकी लिमिटेशन ये है कि एज टारगेट्स कीप स्केलिंग बिकॉज ऑफ स्केलेबल टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेक्ट keep going the way of we can do more with less time now. Example ChatGPT जिसके ऊपर आप I think अगला एपिसोड कर रहे हैं. When those kind of expectations become the norm, then anything that is not effective or efficient starts phasing out. Having said that, ultimately there is no substitute for the human connection. A human selling to another human being, not even selling, having a conversation with another human being has a higher propensity to sell than a
वेबसाइट देन अ और वेबसाइट। उसके अंदर ये होता है ना कि वेबसाइट के अंदर मल्टीपल यूजर्स आप लेकर आ सकते हैं, आपने एड्स ऑन, आपकी एक पाइपलाइन खुल गई और लोग आ रहे हैं और देख रहे हैं, और आप उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज कर रहे हो अपनी लैंडिंग क्या पेज कॉपी को, अपने इमेजेस को, टू सी व्हाट्स वर्किंग बेस्ट एंड व्हाट्स टेकिंग दैट कन्वर्जन रेट हायर अपवर्ड्स। अच्छा, केस इन कॉलिंग पॉइंट, नहीं आपके पास है। मुझे आपकी इस बात से याद है, कपल ऑफ मंथ्स बैक, couple of days back actually, I was interviewing the head of growth at Lam, which you know is a fashion apparel online market, the largest in Pakistan. And she told me a wonderful सोल्यूशन जो उन्होंने जो अपनी कंपनी में उन्होंने करवाया। उन्होंने कहा यार हम लोग ऑनलाइन तो करते ही करते हैं, मतलब पीपल कैन कम एंड पीपल कैन मेक अ परचेज, बट व्हाट अबाउट दोस पीपल हु वांट द सेटिस्फैक्शन ऑफ कन्वर्सिंग विद समवन, सो वी हैव ए कॉल सेंटर। यानी कि हम डिजिटाइज्ड कंपनी हैं, हमारे प्रेमिसेस में हम लोग सिर्फ इकट्ठे होते हैं, वी आर नॉट अ मॉल, बट वी हैव अ कॉल सेंटर वेयर पीपल कैन स्पीक टू यू एंड आपको ऑर्डर करवाएंगे, एंड दैट वर्क्स फॉर दोज एज वेल हु आर नॉट डिजिटली लिटरेट और हैव दैट सॉर्ट ऑफ एक्सेस। These people it specifically works for, and especially in a country like Pakistan where we're still maturing digitally. My digital skills जो है are still, there's a huge room for improvement there. So people do prefer this. There's that aspect of the in-person interaction, like talking to conversing with a person. It also brings in the element of trust, because when you're talking to a human Oh, being, sure. Like nothing there's an else. added layer of trust in that engagement, in that interaction. Mm-hmm. तो आपको शायद वेबसाइट से ना मिले। वेबसाइट पे आप ट्रस्ट क्या देख सकते हो? वेबसाइट पे आपने ट्रस्ट देखना है, आप ऑनलाइन जाओगे, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यार इनका HTTPS सिक्योर है नहीं है, इनका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है। मैं ऑनलाइन जाता हूँ, मैं रिव्यूज देखता हूँ, लोगों के बाइंग एक्सपीरियंसेस किस तरह के थे। सोशल मीडिया पे कहीं आ जाता है, फोरम्स पे, वॉइस ऑफ द कस्टमर फोरम ऑन फेसबुक, जहां आप जाके डिफरेंट कंपनीज के बारे में लोगों ने अपने रिव्यूज रखे हुए हैं और बड़े डिटेल किस्म के। सो आई गो थ्रू ऑल ऑफ दोस पेज व्हिच इज काइंड ऑफ bypassed when you're speaking to someone on the phone. Yeah. And that's not to say that every time you're having a conversation with someone it automatically means there's trust there. Yeah. It's not always the case, but the right kind of salesman or the right kind of operative can guide that conversation. Just like the example of the teacher you were giving at LUMS initially, facilitator. What do you want? Let me help you get there, rather than I want to sell you. Please buy this, Yeah, and yeah, if you can't afford it. Right? So asking questions on why do you want to buy this product? What are you looking for? Are you looking? So अगर कपड़ों की बात हो रही है, yeah. आपने किस तरह की ओकेजन के लिए खरीदने हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में पहनना चाह रही हैं उसका नेचुरल क्लाइमेट क्या है, that can inform the kind of buying decision, right? So if someone's doing that and able to guide, that's a huge reassurance. One example I can personally give, and I'll like big shout out to this company, sastaticket.pk, एक local website. Yeah. आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप क्विकली जाके सारा कुछ बुक कर लेते हैं। आप उनके कॉल सेंटर को कॉल करेंगे, आपके कॉल सेंटर पे वो जिस तरह आपको हैंडल करते हैं आपकी क्वेरी, 3-4 बार दोस्त मेरे साथ इस तरह हुआ, मैं जेन्युइनली पाकिस्तानी कंपनीज को मुझे इंप्रेस करना बहुत ही टॉल ऑर्डर है, बट उन्होंने मुझे किया है। टू द पॉइंट नाउ आई विल नॉट गो टू अ ट्रैवल एजेंट, आई विल सिंपली कॉल, जो नीड सस्ता टिकट मेरे पूरे कर सकता है मैं डायरेक्टली सस्ता टिकट के पास जाऊंगा, मैं किसी ट्रैवल एजेंट के पास नहीं जाता। मैं उनको कॉल की, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई, आई वाज सिटिंग इन द माउंटेन्स इन शिगर, दे कॉल्ड मी बैक ऑन दैट नंबर। नॉर्मली ये होता है, आपने कभी किया होगा, बैंक को कॉल किया आपने, हेल्प लगे हुए हो, लंबी सी प्रॉब्लम जिसका कॉन्टेक्स्ट समझाना है किसी को ताकि आपको हेल्प कर सके, आप समझा रहे हैं, उन्होंने आपको होल्ड पे लगाया है थोड़ी देर के लिए, फिगर आउट और कॉल ड्रॉप हो गई। और उसमें आपने अपना सारा जो है शजरा नसब बयान कर दिया है, आपकी वालदा का नाम, आपकी तहरीके पैदाइश, और वो पहला मेरा ख्याल इंस्टेंस होता है पूरे दिन में जब आपको कोई मोहतरम कह रहा होता है। उसमें वो 20 मिनट के बाद जो आपकी जब कॉल कट जाती है तो आपके मुंह से जो है मोहतरम तो नहीं निकलता, फिर उस वक्त कुछ बहुत कुछ और निकलता है, मोहतरम नहीं निकलता। बहुत कुछ और नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये था कि आपका जो वो उस इंस्टेंस में विद द बैंक, योर कंज्यूमर जर्नी इज ब्रोकन. What I appreciated about the Sasta ticket people was the call dropped, they called me back and they said कि सर हम यहाँ because they took you seriously ना, उन्होंने आपकी बात को समझा, उन्होंने कहा यार क्लाइंट जो है, जैसे मैं I remember I'm a big fan of जुनैद अकरम्स वर्क, तो मैं जुनैद की वीडियो देख रहा हूँ, he was like पाकिस्तान में जो the concept of consumer servicing is so lost on us कि भाई हम लोग we have I don't know if this is a personality problem or if this is a grooming problem,
And we can also talk about it in the context of marketers, because they are the ones who will be hitting consumers and all of those things. मगर we have a very laid back attitude. क्लाइंट आएगा यार, बस आ जाए दुकान पे, हम बैठे, हमने खड़े नहीं होना, डिलीवरी अच्छा इस सोसाइटी से बाहर डिलीवरी नहीं करनी, इस पैसे से काम में वो भी नहीं करना. As compared to us, Indians and Bangladeshi people, they have done a great job. मेरा ख्याल है, and they of course have bigger access, they have more exports than us, and there has to be a reason. मुझे लगता है कि वो consumer जो एक कंज्यूमर सक्सेस का जो एक कॉन्सेप्ट है वो उनको पता है, एंड दैट इज लॉस्ट ऑन अस. सो हमारी जो अर्लियर बात हो रही थी कैपिटलिज्म के बारे में, उसकी एक चीज जो हमने अडॉप्ट कर ली है इज दैट दिस एंटाइटलमेंट, दिस एक्सपेक्टेशन कि आपका पर्पस मेरी जिंदगी में सिर्फ ये है कि अपनी जेब से पैसा निकालो, मुझे पकड़ा दो. एक दफा पकड़ा दिया, डन. सेकेंडली, इट्स अ ग्रूमिंग प्रॉब्लम. इट्स अ ग्रूमिंग प्रॉब्लम बोथ फ्रॉम एन इंडिविजुअल. लीडर्स बहुत कम है, बॉसेस बहुत ज्यादा है. अपने आप को समझते हैं बट बॉसेस बहुत ज्यादा है, लीडर्स कम है. लीडर का मकसद, एटलीस्ट मेरी डेफिनेशन लीडर की है कि और लीडर्स बनाना. और लीडर्स तब बनते हैं जब आपकी क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की कैपेबिलिटी होती है विद इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, आस्किंग द सेंट्रल व्हाई. जब व्हाई पूछ रहा होता है और सारे कंपनी लाइन टो कर रहे होते हैं, तो वो स्टेटस को पे फॉल कर जाती है कि यार एंड पे मेरा बॉस जो है वो वैल्यू क्या करता है. वो वैल्यू करता है कि जब हमारी मंडे मॉर्निंग मीटिंग होगी तो उसके अंदर उसने द ओनली मेट्रिक्स ही केयर्स अबाउट इज द सेल्स एंड द रेवेन्यू मेट्रिक्स. तो वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो जरा सी कम है. अब उसके अंदर होता क्या है कि एक दफा बेच तो ली चीज, रिपीट परचेस किस तरह कैसे जब आपका एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है तो आपकी रिपीट परचेस नहीं आएगी, which means you need to constantly go after new buyers. और जिनको पता चल गया है आप दफा खरीद के, once people have been burnt after buying from you, they might likely not come back to you unless you make huge overtures and a radical change in the way that you do business. So grooming is a huge problem that I've seen within Pakistan, which is that जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स बहुत कम बैठे हुए हैं. जो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होते, फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं, दे लीड फ्रॉम फेयर. अब फेयर का सबसे बड़ा जो निशान है वो ये है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अपनी 1.5 इंच की मस्जिद यहाँ बना के गाड़ रहा हूँ, बट मैं और यहाँ आने नहीं दूंगा. मैं टेरिटोरियल भी हूँगा ना, मैं किसी को और खाऊंगा, क्योंकि सिखा दिया तो मैं So then I won't be in the same sort of demand as I was. अच्छा, उसमें मुझे लगता है कि फेयर की एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि people just stick to one company, one industry, all of their lives, and they don't explore. And उसमें प्रॉब्लम, अब I don't know, मैं आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस कि जब लोग एक ही जगह पे रह जाते हैं तो उनको ये पता होता है यार अब हमने तो इधर ही रहना है, हमारे stakes are completely linked with this company or with this particular sector, and we won't be in demand if we are just kicked out of this company today or if we leave this company. और इसमें मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि people tend to agree to any and everything that the bosses put their way. No boundaries. So a lot of my work in the last 3 to 4 years, a lot of my work has been more focused on trauma informed. कुछ चीजें हुई थी मेरे साथ जिंदगी में that created a massive shift in the way I think. One of them was that just because you're working somewhere doesn't mean you are owned by them. और boundaries होनी बहुत जरूरी. Boundaries के साथ साथ an understanding of how mental health and emotional intelligence come into play in the workplace. So with this lens, I started looking at what are the leaders doing, how are organizations functioning in this way, and a lot of people realize that their biggest resource is not what product they create. Their biggest resource is are the humans working there. I think human resources in itself is a very dehumanizing term. बिकॉज हम लोग इंसान के तौर पे फिर ट्रीट नहीं करते, लोगों को एक प्रोडक्टिव टूल के तौर पे, रिसोर्स, टूल के तौर पे यूज करते हैं, रिसोर्स के तौर पे करते हैं. जब इंसानियत आप उसके इक्वेशन में निकाल देते हैं तो फिर आप ये भी नहीं केयर करते कि यार ये लोग फील किस तरह करते हैं. आर दे बर्न्ड आउट, और आर दे एट पीक मेंटल परफॉर्मेंस, आर दे people that are really loyal to the company, or are they people that are going to switch when due to the economic circumstances a better offer comes their way. Right. जो अच्छा लीडर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि आप मेरे साथ चिपके नहीं रहेंगे, अनलेस आप एक सियासी जमात बना रहे हैं या एक something that calls for loyalty, right? For the national, for something that's a national cause, or for a bigger cause, like let's make money.
हाँ वो Yeah. वही ना दैट गोज बियॉन्ड अस, लाइक वो हमसे भी आगे चला जाए और उस ऑर्गेनाइजेशन से आगे जाके कि यार पाकिस्तान के लिए, या आई सी योर पॉइंट, बिल्कुल सही बात है. ए लीडर वुड encourage you to go explore for Yes. yourself, and he would and I think, and this is what my first boss did for me when I was working for one of Beacon House's projects, TNS in Lahore. So I said I wanted to go explore. I just wanted to see if this is the right thing for me, or if the new opportunity would be the right role for me. And if I'm not okay with that, maybe I could come back. And he said, yes, the doors are open for you. So then I believe that he gave me some sort of a launching pad. यार यहाँ से करो. I am your insurance to a certain extent. You can come back if things don't work out. Things did work out. I didn't have to go back. So growth mindset का वही होता है ना, they come from a place of abundance Oh, and they pass yes. that abundance down. Abundance. Fixed mindsets come from a point of scarcity and fear, Fair. and that's what they pass down. So मैं पहले काफी चीजें पर्सनली लेता था. जब I working in ad agencies, Mhm. I used to be sitting in front of clients, and एक तो बहुत एक horrible client था. I don't mind naming them, Nestle. That आपके जूनियर ब्रांड मैनेजर्स जो होते हैं ना, बच्चे जिनको 1 साल 2 साल हुआ है, वो आके आपको बुलाते थे सामने, आपको समझाते थे कि आपका काम आपने किस तरह करना है. अच्छा. अब पूरे केस के अंदर मैं पहले चीजें बड़ी पर्सनली लेता था. मैं कहता था यार मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने मास्टर्स डिग्री भी की हुई है, हाँ. ये सब कुछ भी. इन बच्चों को आके मुझे समझा रहे नहीं, ये तो इस तरह तो नहीं है, ये तो मेरे पर्सनली मैं अटैक हो रहा. अच्छा. And then, because of the shift, realize that people aren't attacking you personally. They're simply passing down what they've been taught, whether at home, within personal, within professional environments. There's a तो reason अगर they're behaving this way. हाँ, और ये ब्लीप कर दीजिएगा मेरा सेंटेंस, अगर एक बंदा काम पे बन रहा है तो चांसेस आर कि उसको एक क्या बॉस मिला था जिसने उसको समझाया कि ये चीज नॉर्मल है और काम इसी तरह होता है और तरीका कोई नहीं है काम करने का. They are also the what you have to look for within an individual in any environment is, are they coachable? Because if they're coachable, then they can unlearn past parameters and have the propensity to learn new ones. जो नहीं होते वो आ जाते हैं, they take a step back and say no, this is not right, I'm right, you're wrong. They look at it from a very black and white kind of perspective. No one anywhere knows what the hell they're doing. Everyone is trying their best. Everyone from the rookie to the established career professional is trying to figure out how to get things done optimally. The only people with more experience have is some lived experiences of when things might not work out or have a higher probability of not working out, but nothing is set in stone. Two things that validate that. One, the life that we lived 25 years ago is completely different from the life that we're living presently. Different market variables, different way we communicate to the customer, different methodologies, different understanding of the human brain and how it functions, how society. वो information नहीं थी पहले. तो जो अगर पुराना काम भी कर रहे हैं, जो उन्होंने सीखा हुआ है, वो नए वेरिएबल्स को अप्लाई कर रहे हैं, which means no short way of knowing if this will work. So no one really knows. No one really knows. It's just about people trying and constantly showing up. जो बंदा आपको आके कहेगा कि उसको सब कुछ पता है और वही जानता है करने का, is the one person that doesn't know crap and is putting up a facade. They want to tell you an image versus actually being able to share their services and their expertise with you. And I think this is where your whatever you said earlier kicks in. कि यार, if you have to be coachable, you have to be a teachable person. क्योंकि अगर आप teachable नहीं हो, there's not going to be any input you're going to get from me. Yeah. And or from anyone. और मेरा ख्याल है उसकी एक बहुत बड़ी reason ये है कि the way we are, जिस तरह से भी अब हम हैं, whatever situations we are in and default and all of those things, is the way we behave, not only with the consumers, with the family members, with our colleagues, with everyone. And also, I think our inability to accept that we don't know everything, and that's why we have to refer to the experts and to the books that we have not read. So, expert भी जो एक चीज होती है ना, is something. आपने मेरी इंट्रोडक्शन में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था जो जनरली मैं अपने लिए कभी नहीं करता, ना मैं अच्छे सेंस में नहीं यूज करता, which is guru.
एक knowledgeable इंसान हो सकता है, can have a lot of wisdom, but expertise जो होती हैं are something that's very subjective. I can have an expertise in something, so I can be a marketing expert, and then you put me into an industry that I have not worked in. I am not exactly an expert. I am a knowledgeable person with an understanding of how principles work within different environments, but I am not an expert in that environment. There are no real experts. There are only people who are curious and keep expanding on that curiosity by learning new things. Quote by Socrates that I love, which said, I am the wisest man alive, for I know one thing for certain, and that I know nothing at all. Approaching from a beginner's mindset allows you to bypass a lot of biases that would normally enter the frame from someone who's approaching from a self-assured perspective, thinking they know everything. If you're curious, you will oftentimes come up and understand things from such a sound perspective that you would never be able to do so if you came in with a preconceived notion about how to do things, और एक formula है वो हर बार लगाओगे तो वो चल जाएगा वाली mentality. Be curious, be coachable, be humble, but at the most important thing, always realize that there are things that you cannot see. मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे दूं. इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, आपको मेरी विंडो नजर आ रही है, मुझे आपकी विंडो नजर आ रही है. आपको इस वक्त ये नहीं नजर आ रहा मेरा हाथ जहां है उसका वो एनवायरनमेंट किस तरह की लगती है, और मुझे नजर आ रहा कि आपके जो पॉडकास्ट का जो वो है दूसरा साइड है, हैंडल है, और स्क्रीन के बाहर क्या है. क्या है. मैं पूछूंगा तो आप शिफ्ट कर सकते हैं गेज, और मुझे वो पर्सपेक्टिव नजर आ सकता है, वो मेरे नजरिए को इन्फॉर्म कर सकता है. बट अगर मैं इसी एस्पेक्ट से देखूं कि जी ये जो डब्बा है ये अमार की दुनिया है, और बस क्योंकि मैंने यही देखा हुआ है तो अमार की दुनिया भी इतनी है, अमार कभी स्क्रीन स्विच ऑफ करके इस दुनिया से बाहर नहीं निकलेगा, इज नॉट एग्जैक्टली द बेस्ट assumption to make. But we do that every day. We do that based on looking at people, seeing what they're doing, judging them in that one context and saying यही ये सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है. इसके अलावा और कुछ नहीं. वही ना, सारे वो सारी चीजें कि भाई जब आप अपना एक्सपोजर बढ़ाओगे तो फिर ऑफ कोर्स देन यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार इसके बियॉन्ड क्या चीजें हैं. और वो सिर्फ तब हो सकता है व्हेन यू विल बी सेल्फ अश्योर्ड, हाँ यार मेरा बनता है, मैंने क्वेश्चंस करने हैं. एंड दैट हैज टू बी इनग्रेन्ड इन अस इफ वी आर गोइंग टू compete in this world, in this century, with all of these countries, especially with the neighboring countries. I think it has to start somewhere. It has to start with the why. Yes, it should be starting with the why on an individual level, and support within the environment that person exists. For sure. A lot of time we ask questions and people put other people down. We put other people down, go तुम्हें ये नहीं पता, ये तो सिंपल सी चीज है, तुम्हें कैसे नहीं पता था. And we're shaming people and we're basically stigmatizing curiosity कि नहीं ये तुम्हें पता होना चाहिए. आपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम किया, आपको भी पता होगा कितना मुश्किल है किसी कमरे में किसी मीटिंग में बैठे होते हुए आपसे कोई सवाल पूछ ले और आप जवाब दें आई डोंट नो. बहुत मुश्किल. हाँ सही बात है, बहुत मुश्किल काम है ये कहना कि भाई आई डोंट नो. और वही वाली चीज है ना, आई रिमेम्बर माय डैड टेलिंग मी दिस कोटेशन कि a person who doesn't ask a question when he needs to is a fool for a lifetime. A person who does is a fool for only 5 minutes. He said it a better way, of course, but that's the crux. वो चीज आती नहीं, because yes, you're right, हमने उसको इतना मतलब inquisitiveness को, curiosity को, we have stigmatized it so much, and at all the different levels. It's not just the corporate environment. I think it starts with our families. यार ये तो तुम्हें पता होना चाहिए था, as if I was supposed to know this from like भाई मुझे नहीं पता है, now you tell me, I don't know this. But care, bringing our podcast down to the last question, and I think this is going to help everyone a lot because you have a lot of experience, and you know you could talk from your you could refer to your experiences and let us know, who do you think or what do you think a marketer should look like? हर तरह से, मतलब like knowledge की बात हो गई, like मतलब उसकी inquisitiveness, it could be one of those things, the way he or she dresses up. No, इसके अलावा उसकी education की बात हो गई. Who do you think is a real marketer? So marketers come in all shapes and sizes. So from a physical and visual perspective, that doesn't really, there's no right answer for it.
What I would say is a marketer comes from curiosity. A Mm-hmm. marketer comes from the desire to learn. And a marketer will always look at and be curious about other cultures, Okay. will always look for contrast. Doing the same, finding the same thing and trying to play within the same environment without any contrast is not going to create a great marketer. Great marketers, if you're looking at behavior change genuinely इसी चीज पे करते हैं ना कि एक contrasting behavior implement Mm-hmm. करना होता है. अभी ये अब जो desired state है वो कुछ और है. A marketer should always look for contrast in terms of how things can be, Mm-hmm. not just how things are. Learn more about the obviously एक standard understanding होनी चाहिए of the industry that you're working in. But a great marketer looks at all of the other industries connecting across the board. And most importantly, the one thing that ties it all together, the marketer is curious about who he or she or they are speaking to. Because if you don't have a clear idea of who it is that you're speaking to, you will be saying nonsense to everyone, hoping that there's a dent in your conversion numbers, but you won't see that happening. Unless you Mm-hmm. have a clear idea of who it is that you're speaking to, your marketing efforts will be subpar at best. So if Mm-hmm. you really want to be a great marketer, deep dive as much as you can into understanding human psychology and understanding how human beings work and how they work within the labels of different cultures. तो अगर अमेरिका में कोई बैठा हुआ है तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसका कल्चर क्या है, बिलीव्स क्या है उस इकोसिस्टम के, एंड देन नो दैट एंड स्पीक टू दैट. कोई कराची में बैठा हुआ है तो डिफरेंट होगा, कोई लालू खेत में बैठा है डिफरेंट होगा, बैंकॉक में डिफरेंट होगा, पेरिस में डिफरेंट होगा. Don't approach it from a one size fits all. Even if your product is the most generic thing on the planet, do not Mm-hmm. approach things from a one size fits all thing. I think if Mm-hmm. anything, we are seeing that one size fits all as a broader philosophy has failed globally. That's why you see things breaking down from their really standard black and white definitions like male or female into a whole spectrum in the middle from left to right with a whole Yeah. spectrum in the. People are sick and tired of being defined under broad labels, and doing so is not going to help the marketer understand the audience any better. Yeah. मार्केटर का काम यही होता है ना कि जितना मुझे, फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट कर रहा हूँ अमार को, तो मुझे पता होना चाहिए अमार की लाइक्स क्या है, अमार को क्या पसंद है, अमार की रूटीन किस तरह की है, अमार की बिलीव्स जो है अराउंड डिफरेंट थिंग्स वो किस तरह की है. अब मैं आपका दिमाग नहीं रीड कर सकता. सो द ओनली वे आई कैन एक्चुअली गेट टू दैट इंफॉर्मेशन इज इफ आई सिट डाउन, have the patience to ask you those questions and actually listen to your responses, just like a teacher would. And give me, like, being attentive, like giving me the gift of your pure attention. तो वो Listeners. मेरा ख्याल है हम लोग दूसरे को वो इंटरप्ट इतना ज्यादा करते हैं ना, एंड वी वही वाली बात है, इट टेक्स रूट फ्रॉम दिस थिंग दैट वी बिलीव इन, दैट वी नो एवरीथिंग. So when we will know everything, we would always jump down to cutting someone off and letting them know that this is what you should be talking about. This is what you're referring to. So, असल में पता क्या है, if you look drill down to like a core psychological aspect of it, it's actually people who interrupt other people or who speak over other people, who come from the perspective that they know everything, are trying to create worth in the other person's perspective for themselves. कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जिससे दूसरे बंदे के दिमाग में मेरे लिए अहमियत आ जाए. अहमियत आ जाए. Absolutely. The rule, the actual thing is, हम अहमियत के साथ पैदा होते हैं. हमें अहमियत कोई और नहीं देता. हम अपने आप को अहमियत देना शुरू करेंगे तो शायद हम दूसरों को इंटरप्ट करना बंद कर देंगे. शायद हम सुनेंगे सिर्फ इस नियत से नहीं कि हमने रिस्पॉन्स क्या देना है, बट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. What the other person is saying, what the other person is looking for. और मेरा ख्याल है वही एक जॉब है मार्केटर. Then thank you so much, Tajdar. This has been one of the best discussions that I have had on Outloud this season. I really wanted to speak to someone who could talk about marketing और सारी जो है मजे की बातें कर सके. But I think I have so many other questions जो कि मैं आज इस podcast में नहीं कर सका. I hope we'll get a chance to do another podcast and where we could meet in person and face to face do another session. I absolutely love this conversation and would definitely be up for another one. Thank you so much for having me here.